हेलो बच्चों, आज हमने एक अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक नया चैप्टर लेकर आया, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इसीलिए है जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो फिनेंशियल जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑल दोस थिंग्स आपको इसका अंदर में आप जान सकते हैं। क्यों? जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट बनाना, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट होने के बाद भी आप बोल नहीं सकते जी ऑर्गेनाइजेशंस का जो फिनेंशियल ऑपरेशंस जो है उसमें लिक्विडिटी, दैट मीन कैश फ्लोज, दैट मीन नेट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो आपको पास है। अदरवाइज आप रेगुलर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, मटेरियल खरीद करने के लिए पैसा, सैलरी जो देने के लिए जो वर्किंग कैपिटल आपको ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो शॉर्टेज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू आर टू नो दैट जो फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपको कैश लिक्विडिटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमने इधर देखेंगे जो ऑब्जेक्ट क्या है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, दैट इज द नेट ऑफ दैट। हियर ओनली कैश एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट। कैश इक्विवेलेंट मतलब दैट इज योर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जैसे आपको फंड मैनेजमेंट के लिए थोड़ा पैसा आपको ज्यादा हो गया कैश, शॉर्ट टर्म लेस देन 3 months, कोई भी जगह में आप रख देने के बाद कुछ तो इंटरेस्ट आएगा। सो whenever required you can convert it into cash. So that's why you are talking about cash and cash equivalent. So this is the informations are there. So कैश फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए चाहिए? जो आपको जो बिजनेसमैन जो स्टेक होल्डर है वो सब लोग जानना चाहते हैं जो आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फिनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो इसको पॉजिटिव है कि नहीं है, दैट यू आर टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। एंड अनदर पॉइंट, एबिलिटी टू एंटरप्राइज टू जेनरेट कैश, जो इसमें हमने बोल रहे हैं ना, एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जेनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू कैनॉट जेनरेट, वही जो बोल रहे हैं ना, जो आप क्रेडिट में माल बेच दे रहा है, रिकवरी हो रहा है नहीं, प्रॉफिट तो हो जा रहा है बट उसमें तो कैश आ रहा है नहीं ना। सो ऑल्टरनेटिवली जो मटेरियल खरीद करने के लिए जाओगे और पेबल जिसका पास आप मटेरियल बाय क्रेडिट खरीद के उसको पैसा देने के लिए आपको पैसा मिलेगा नहीं। सो दोज आर द सिचुएशन सबको जानना चाहिए। देन आपको इधर एक्सप्लेन करना है जो बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसमें हम लोग को क्या है, क्या बेनिफिट है। यू सी दैट इवेल्युएट द एंटरप्राइज द चेंजेस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक पोजीशन एसेट का चेंज हो रहा है, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, दैट इज वेरी वाइटल। लिक्विड, योर सॉल्वेंसी पोजीशंस is better or not, that you can understand from your cash flow statement. और एक है टू जनरेट कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट अभी मान लिया ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब पैसा क्यों हो अननेसेसरली ब्लॉक करके रखेंगे। एंड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज ऑल्सो यू कैन नो दैट। जैसे आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस आप कर रहे हैं उसको प्रेजेंट मनी वैल्यू आप कन्वर्ट करेंगे, वो भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज आप जान सकते। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑल्सो इसमें आपको पता चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो रिलेशनशिप, वही जो हमने बोल रहा है ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो, प्रॉफिटेबल तो है बट एट द सेम टाइम वो नेट कैश फ्लो है कि नहीं है वो भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। सो सेकेंड जो पॉइंट है जो कैश फ्लोज क्या है, इनफ्लोज, व्हिच आर द आइटम इनफ्लोज, कैश सेल्स डायरेक्ट, कैश सेल्स रिसीट फ्रॉम डेटर्स और फ्रॉम रिसीवेबल्स, जिसके आप क्रेडिट में बेच दिया था उसके पास जो पैसा आ गया वो भी आपको कैश इनफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज ऑल्सो योर इनफ्लो।
आउटफ्लो कौन सा है? सपोज आप मशीनरी परचेज करा, आपको जिधर पैसा चला जा रहा है मेनली वो आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, जिसका पास आप क्रेडिट में मटेरियल खरीद किया था उसको पैसा दे रहा है। सो दैट इज द योर टोटल दिस थिंग। सो योर दिस कैश फ्लो सिस्टम में you start with your opening cash, add with all inflows, less all your outflows, then your closing cash balance it will come. So this is the basic methods of your direct method. We can talk about that. Straightway cash transactions only. Opening cash, cash inflows, less cash outflows. Now हम लोग को जो देखना पड़ेगा, जो एक्टिविटी वाइज, ऑपरेशंस वाइज, वेरियस हेड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज आपको मिला हुआ है। एक जो टोटल कैश फ्लो में ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आपको कैश फ्लो जानना चाहते, यू आर टू स्टार्ट ऑल द दिस जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हाउ टू ट्रीट विथ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो निकालने के लिए, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। As per Accounting Standard 3, Institute of Chartered Accountants of India, जो accounting guideline is there, as per Accounting Standard 3 wise आपको कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Now our way of discussions will be basically on the basis of your indirect method. So direct method तो आपको बोल दे डायरेक्ट कैश ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट्स, पेमेंट्स, योर क्लोजिंग बैलेंस कैश फ्लो हैज कम। But here we have to start with your statement of profit and loss account. So how to you have to add back and your calculations of your net cash from operations we have to understand for that. So we will take an example with a problem and then we will find that how to calculate the cash from operations from profit and loss account only. So you see that here, suppose your statement of profit and loss as on 31/3/2022, ओके, ये आपको पास दिया गया है। जैसे उसमें पर्टिकुलर्स रहेगा, देन नोट, कुछ नोट और डिटेल्स लिंक करना चाहते हो वो दे देते, एंड योर अमाउंट रुपीस, राइट। सो ये जो फिगर है इसमें पर्टिकुलर्स में नंबर 1 योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट, योर से 60,000 एंड योर दिस थिंग्स अदर इनकम 5,000, वो डिटेलिंग हमने देंगे, नोट 1 में हमने दे रहा है। सो नंबर 3 जो होगा आपको 1 + 2 दैट इज योर टोटल रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यू इज योर 65,000, राइट, 65,000। नाउ नंबर 4 में आप जो दे रहा है योर एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, ऑपरेशंस के लिए मटेरियल्स कंज्यूम योर से 15,000, देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स 10,000, योर depreciation and amortization expenses 7,000। ये जो है इसको हमने नोट 2 में देते, ये 7,000 टेकिंग टुगेदर मोर देन वन फिगर। अदर एक्सपेंसेस योर दिस कम्स अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो 1 2 एक्सपेंसेस टेकिंग टुगेदर 13,000। So total your coming is your 45,000, all your expenditure under 3. Then your profit will come
total 3 minus 4, that is your profit. How much it is coming? 20,000. 65,000 minus 45,000, 20,000. So this is the profit we are taking there. So from that profit part, if you deduct your provision for less, provision for taxation 8,000, then your 12,000 your profit after tax. So this will be taking from your provision for taxation accounted subsequently. So this 12,000 your profit after tax. Okay. So we have been given these informations from your this way, and here that 5,000 is you have been given that way. 5,000 your other income note 1 आपको दिया गया है. 5,000 means profit on sale of machinery. Your 2,000 income tax refund, your 3,000. So total your 5,000. You are getting that this 5,000 we have taken here. So this is one note. Then note 2 आपको दिया गया है depreciation and amortization expenses. उसमें depreciation है your 5,000 and amortization expenses 2,000. You know that what is amortization expenses? These things. And note 3 आपको जो दिया गया है वो है other expenses. अदर एक्सपेंस में आपको रेंट मिलेगा. रेंट है 10,000 एंड योर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3,000. So your 13,000. You are getting that. That 13,000 you are getting from here, note 3, and your 7,000 you are getting for depreciation amortization expenses. This is the problem actually. So now we are giving some more additional informations are given here that we will be showing here. So that portions will be giving that thing additional information. Which are those additional informations? एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है जो 2 डिफरेंट पीरियड मार्च 31st 2021 मार्च 31st 2022 2 डिफरेंट पीरियड्स आपको फिगर दिया गया है. उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन योर 10,000 and here closing this year is 13,000. Similarly, rent payable your 2,000, 2,500. Then your trade payable your 21,000, 25,000. Then your trade receivable your 15,000 and 21,000. And inventories means your stock 25,000 and 22,000. Now आपको जो दिया गया है आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है. उसमें डिटेल भी दिया गया है कौन अदर इनकम कितना है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है, अदर एक्सपेंस कितना है.
taking together your profit is 12,000. So from that profit only you are to start with your that other portions. You are to start for that. How you will start for that other portions? Now we will be starting for your solution part. Solution part, if you do that, these portions for informations part we will keep it. This side will be giving you the solutions part. You see that this is an indirect method. You understand that what is indirect method? See, one point we can tell you here, whether you follow the indirect method or direct method, the problem will be the same only. Ultimate result become the same. But here you start with profit and loss account. You are to see that what is your cash inflow and outflow effect is there. You have to start with that. So how to start with your profit? Net profit before taxation. See, net profit before taxation, tax part, your these things, general operating profit concept we are going, no, so taxation is the subsequent part. So net profit before taxation, how much? You see that here profit, here your comes 12,000 your profit came. So from that 8,000 your provisions for taxation. ये जो 8,000 has come, no, provision for taxation, that you have to add it, provision for taxation, then your 20,000, then less income tax received 3,000. So this is your profit before taxation, because income tax adjustment we are leaving behind that. We are starting with that your 17,000, 20,000 minus 3,000, 17,000. So this is your starting point for your net profit before taxation, right? So these calculations, your note, it will be there. We are having it 17,000. Then what items you have to add it? You have to add it at adjustment of non-cash items and non-operating items, because your operating profit and loss we are talking about, no, so operating cash flow if you are doing that, so your non-cash items and non-operating item you have to add back it. What is that thing? Your depreciation is there. We take their depreciation, no. So that depreciation you have to add back again, because depreciation is a non-cash item. उसके साथ कैश का कोई लेना देना नहीं है. So that depreciation we have to add it back. Then your goodwill amortized. This is also a non-cash item. Goodwill amortized. This is also 2,000, and your loss on sale of fixed assets. This is also not your finance, operating part. This is not involved. So that's why I am the non-cash and non-operating. So this 10,000 we are add back. We are making it, because ultimately your profit has been considered taking into consideration all those things. So you are to adding it back. Actual cash operations आपको जानना चाहिए. So that is coming your 27,000, right? So from the 27,000 we have to do some other adjustments also. So let us start with your here space little bit problem is there. So we will be taking here, start with brought forward 27,000, that what we ended there. From there we will minus is less profit on sale of machinery.
you see that you are generally, your business is not for machinery. Profit on sale of machinery, this is your financial transactions only, other area. Your operating activities आप जब कर रहा है, profit on sale of machinery, that 2000 profit on sale of machinery here, no, said that 2000 also you have to make it less. So that will be net of your 25,000. So then this will be the operating profit before working capital changes. You see, now how your working capital changes, that you have to understand there. See, from this side, if you see that we have given some informations, provision for taxation, rent payable, trade receivable, inventories, all those things, right? So if you see these things from that side, if you see that also directly from here, you see that rent payable, your earlier year your 2000, next year your 2500. So whenever any liability increases, that means your fund comes other way around. So you have to see that. So rent payable increase in rent payable. So 2500 and 2000, then 500 your increase rent payable. Then you come from here, another this thing, your trade payable, that is also 21,000 to 25,000. Trade payable also your source of fund only. So this is also, so that means increase in trade payable. Your that how much, 25,000, 21,000, this is 4,000. Then you see that inventories, your that 25,000, it is 22,000. See, inventories reduced, that means fund came. So your decrease in investment inventories, how much it is, 25 to 22,000, that means 3,000. So if you take together 7,500, so it will be your 32,500, it will come. Next we have to go your trade receivable. Trade receivable has increased from 15,000 to 21,000. That means your fund has been blocked there. Trade receivables means your assets. So when assets, your debtors increase, so already fund blocked there. So we talk here other way around. This is the outflow concept में हम देख सकते हैं. Fund your block there. Less increase in trade receivable. So this 6,000 taking together your 26,500. So 26,500 up to that level we got it. So now we will be starting here from brought forward 26,500, right? Now income tax paid. You see that income tax paid, how you will calculate the income tax? You see that you do have that provision for taxation. Provision for taxation, this is a liability. You see that your provision for taxation, your from here your opening balance, how much your provision for taxation? 10,000. This side you see that provision for taxation, your 10,000 opening balance, closing balance 13,000. You see that here straightway you cannot increase or decrease, because you have next year also some provisions you have made it. So your balance BD
That means provisions means your credit balance. How much opening balance it was? 10,000, right? And next year balance CD means next year closing balance it will be your 13,000, right? And your another year provisions you are making profit and loss account. You are making how much? 8,000. Current provision also making 18,000, and here 18,000. Definitely this balancing figure is the income tax paid. So that income tax paid 5,000, you have to take an adjustment because your fund goes out 5,000, and that is also not your operating activities part, this thing. So this is your that you have to less for that amount. So ultimately you will be just 5,000 less, that means 21,500. And your another is your that income tax refund. Income tax refund, you see that here, that income tax refund, that is also your that way you have taken it back. Income tax refund, you have to add it back because that you have less it income tax refund. So that 3,000 you have to add it back. So this 24,500 will be your net cash flow from operating activities. See why we are doing all those things, because if you mix together we will not be able to know that जो आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसमें कैश फ्लो क्या है. बिकॉज इफ यू ऑल नॉन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन कैश आइटम यू have clubbed together, so you will not be able to understand what is your really your cash flow changes. So that's why these adjustments are very very vital to understand. आपको जो really आपको जो net cash flow from operations आपको जानना चाहिए. So this adjustment is very very important for that. So your any payable account increase or decrease, any asset, short term assets rather, your trade receivables, inventories, whether it is increasing or decreasing, so whether your fund is blocked there or fund movement is there, so taking into considerations आपको ये बनाना पड़ेगा net cash from operations. So your syllabus maximum this way, your indirect method you have to do, because direct method is little bit simplified only. There we will be doing only for cash transactions only. So in these situations little bit complicated, but your item will be very clear for that. We are concluding the video here, and we will be doing for these things for our next chapter. Some other problems also we will be discussing. Please do subscribe to my channel so that I will be motivated to do some more videos for your exam purposes. We are concluding the videos here. Have a good day.